Assalamu alaikum. This is I'm Hasnan Abbas, and we are live today from the platform of PSTD. So I work at PSTD. I'm a senior program manager here, and I also look after marketing and business development at the Society for Training and Development. With me, we have Sahil Adeem today. Hi, Sahil. How are you? Alhamdulillah, sir. How are you doing? Alhamdulillah, first class, first class. There's a lot that we need to talk about. Before that, I'll move into the introduction, a little bit about the Pakistan Society for Training and Development. As you all know, PSTD has been around for quite a while now. It's more than 5 decades. Alhamdulillah, mashallah. It was a vision of Mia Ghani Saab to have an organization, to have an institution, rather, to foster and promote learning and development for professionals. That was the idea. That was the vision. That's the direction that we've taken, and we do a lot that we will be keep talking about during our conversation today. The time frame that we have today with us is around 40-45 minutes, and we live on Facebook. All of you are welcome. You're all most welcome to join us, send in your comments and questions, if any. During our conversation, we'll keep asking you those questions. I'll forward those questions to Sahil, and then we'll keep answering the so Sahil Adeem is one of our trainers and consultants on board with us. Uh, he's a behavioral psychologist and he works as a consultant with us. He's been with Bell Canada for 5 years for his professional experience, and after that, he came to Pakistan. So he served 2 years with Telenor Pakistan, following a pretty good, impressive role, which is being the head of strategy at Zong, which is one of the biggest telecom organizations in the world. So, Sahil, Yes, sir. our topic. Let's come to the topic for the day. Today we'll be talking about, as the announcement suggests, it's the agile mindset. So, Sahil, what do you mean by agile mindset? Whoa, that's okay. You're gonna start with the deeper side of things. Agility actually is see, there are two ways. Agile का जो लफ्ज़ है ना पाकिस्तान में, there's such a big fever of the project management and Scrum model of agile, and people all of a sudden think that there's going to be a certain go-to technique, a template that I have to have for being agile. For example, there's going to be a course that I'll have to follow, and if I don't follow that course, and if I miss out on a few steps, I might as well not be agile, or I'm not gonna be agile. मगर जो basis है ना इस लफ्ज की, it's such a beautiful word. Agility actually means resilience, and resilience and agility do not come without a problem. So in other words, agility is your internal design, the body's human's design, the internal design against all of the problems that we're ever going to face. And this design, we need to understand of how our body works and how the coping mechanism is inside our own psychology and our physiology, and how strong we are by design. I mean, there's a belief that every human being is actually designed or born in the kind of problems that he can solve. So let's just say 1,000 years ago, people could not possibly solve those problems. And that's why, if we were to go there or they were to come here, it would have been a chaotic situation. So everybody who actually comes into a situation or a problem, he's already developed to cope with it. And the only problem that we have is the belief or the reassurance by people that I can't, or there's an inability that I'll have to overcome in terms of not coping with any kind of problem that I'm going to face. Even though we are the perfect design to face and solve all the problems that we are ever going to face, ever. So, in other words, no human being can face any problem that is bigger than that human being. There is no design of the problem. Because people, when they see problems, the complexity actually overwhelms us and we think, oh, it's chaos. But problems also have a design.
and that design is a subset of our own design. So we are the superset of all the problems we're going to solve. It is the middle ground through which a wall is erected through our childhood, जो कि शायद माँ बाप बना देते हैं, या peers, or the herd, which is, you know, the company or the people I'm actually hanging out with. They actually keep shoving this idea in our minds that, you know what, this is unsolvable, or uske saath ye ho gaya, uska career वैसे तबाह हो गया, corona आ गया तो अब कुछ भी नहीं होगा. So it's mass hysteria that actually creates this invisible wall between our capability to solve any problem. So agility is an innate concept that we're all born with to solve the biggest problem that we can possibly fathom. And this is how I look at it, and this is how we all should look at it. And I'm actually giving a very academic point of view here. I'm not giving you a motivational speech. I mean, this is chemistry I'm talking about. This is how strong we are. Sahil, so when I was we were preparing a little for this idea to be discussed today, like agility. So if I compare the concept with an animal, monkey comes to my mind, right? Yep. So if you've seen a monkey, so whenever I've been to Islamabad, I've seen a monkey. You know, all of these monkeys jumping from one tree to another. So that comes to mind. Yeah, they are agile, like physically agile. They have strong limbs. They jump from one place to another. And then that brings me to the question: when is it that they learned? I'm sure they learned, just like humans learn to walk and swim. Similarly, monkeys at some point in time learn to to climb trees and be agile and be really quick, grab that food and run away, right? So were they not? What is those characteristics of a monkey, and how do we learn from those animals? And then what are the main tools that we take and go forward with to understand the agile mindset? Well, that's a good, very good analogy. Actually, let's start with the monkey. See, whenever we see a monkey, we actually naturally assume that he learned it, and he adapted, and he was born with no knowledge or no sense of climbing and hopping around trees and branches. And that's exactly where I'm coming from. Whenever we see a calf of a cow born, all of a sudden, of any zebras and horses, their 1 day old babies actually start to walk. Actually, not 1 day, their 1 minute old babies start to walk. Our babies start to walk by 2 years. You know what I'm saying? So whenever we see a monkey, we need to understand that the design of the monkey is the core strength of the monkey. And that's an amazing example, because I hear this monkey example in a lot of agility model as well. And they use that a lot because, we see that kind of triumph of the unachievable, and, the kind of heights that it jumps from, and the kind of, weakness it apparently has versus the kind of strength it shows in its daily chores. So we see that, but we somehow we do not see that in human beings. We actually underplay this concept of human beings so much that in our own psychology we think that human beings are physically the weakest animal in terms of comparison between any and every animal. But that might as well be true. But where is our strength then? Our strength is in our inborn agility. That's mental agility. The kind of problems that we can solve, and monkeys or any animals cannot solve those problems that we are ever going to face. And that's why we are where we are. So it's something which is kind of depressing when it comes down to looking at it academically, because most of the human beings they are here, most of them, they don't even recognize who they actually are. And I'm talking about big companies. When I go there for training, people are actually playing their 1 or 2%, maybe even 10% at best. And I just, it's pretty depressive when you come down to realizing कि लोग अपना potential उनको पता ही नहीं. I mean, they don't even know what they got, let alone know कि technique क्या इस्तेमाल करें to use their potential to come out of all of those situations. And वो कौन define करता है कि कितना potential use करना है? The herd.
जो भी सीनियर्स पहले से जो भी पैराडाइम चलती हुई आ रही होती है उसी को वो नॉर्म बनाते हैं और उस नॉर्म के नीचे वो अपने स्टैंडर्ड सेट करते हैं. And that norm most of the time is set at less than 1% of the actual potential of the human beings. So Interesting. I always believed when I was young that, you know, when I was starting a career, that any and every employee is bigger than any and every company is ever going to work for. But I see the exact reverse psychology being played. We actually think that every company in the world is bigger than any employee that works for it. And that's a natural psychology that we all see every day. But I actually believe the opposite. I think any and every employee is bigger than any and every company. The kind of, I mean, we got nuclear reactors sitting here and we never get to use a cent out of it. And this is why I think we need to know what agility is, what agile mindset actually can give us. And that is an exploration like, you know, like an archaeologist. Go inside and see कि क्या-क्या खजाने आपके पास थे. सिर्फ एक या दो चीजों की कमी थी जो कि टेक्निक के तौर पे आती है. और वो एक दफा बंदे को पता चल जाए. It's overwhelmingly exciting. When I went into problem solving models professionally, तो मैं हैरान रह गया था कि मतलब it was within me that I had to solve all of those problems. मतलब मैंने प्रोफेशनल कोर्सेज जब लेने शुरू किए ना देने से पहले, क्योंकि ट्रेनिंग ऑफ द ट्रेनर मेरी तो 5 साल चली थी कनाडा में. They don't let you train unless of course you have a degree, and for that I had to do psychology, social sciences की degree. So when I went into problem solving techniques and models, they were not making me solve other people's problems. I didn't have a license for that. They were actually helping me solve my own problems through models. और फिर मुझे पता चला कि मेरे इंडिविजुअल सेल्फ के अंदर से लेके मेरे घर के अंदर, मेरी फैमिली के अंदर, all of those things were self created problems. और वो क्या चीज थी? वो नोशन था कि ये काम सॉल्व हो ही नहीं सकता. This is bigger than me. And one by one we try and solve it, and you start to think that it's not just that we're conquering the world, we're actually conquering ourselves. कि इतनी चीजें थी जो कि हम कर सकते हैं और हमें पता ही नहीं होता. बस और इसलिए कि you know no one is doing it. That's the only reason why people are not discovering this out, because no one is doing it. You know, trend ही कोई नहीं है, paradigm ही ऐसी नहीं है. We are not self-exploratory people. So this brings to my another question is a little bit of background with it. So we visit organizations, we do consulting assignments, we learn from them, we learn how the systems, processes, they work. There's a set of values for every organization. So with a very few, I've seen this word agility there. The people do, have written that word down as part of their values, that we value agility and we believe in it, and we really need to continuously change our processes, and we need to have that culture. So the people, processes, and technology, they should all be aligned with it. So that's a very few organizations, local and international, they claim to have agility as one of their values. But maybe slowly and gradually, there was no shift in the paradigm. It was a gradual change that was taking place due to internet, due to computers coming in, due to cell phones coming in, making communication easy and simple. Then we had smartphones, right? So we could see and talk to each other and have those video calls and having those meetings and talking to your customers and the team. So technology played as a catalyst in the communication. It became more engaging because पहले आप phone पे line पे wait करते थे, आप phone पे आराम से बात करते. Now you can look at the person and talk to him. So it's more engaging. लेकिन pattern अभी भी interrupt नहीं हुआ था. A slow and gradual change taking place. Most of the times we were stuck with monotony in organization. हम जिस तरह काम कर रहे थे, हम तो वही papers के through काम कर रहे होते हैं. हम तो वही conference hall में बैठ के हम लोग meetings कर रहे होते हैं. But now Mother Nature has pushed us. मजबूरन हमें आगे जाना पड़ रहा है, think through करना है. सवालात बहुत सारे जहन में आ गए हैं, जिसकी वजह से वो stress, fear, anxiety सारी चीजें आ गई हैं कि अच्छा अब ये क्या हो गया. अब तो I cannot go to work, I'll have to work from home. अब तो I cannot sit and उस तरह बैठ के comfortably not make everybody available in that room and sit and talk and discuss problems and come up with solutions. मैं तो वो भी नहीं कर सकता. मेरा customer किधर है? वो भी अपने घर बैठा है, वो भी ऑफिस नहीं बैठा हुआ है. So how are they making money? In turn, how do they need us? So their needs have changed. Now they need an online solution. So okay, so to provide an online solution, how do I realign my processes?
मैं अपनी टीम्स कैसे बनाऊं। पहले हमारे पास एक ट्रेनिंग सेंटर था जिसमें लोग आते थे, वो लर्न करते थे। दैट वाज द ऑब्जेक्टिव, दैट इज हाउ वी यूज्ड टू फुलफिल द ऑब्जेक्टिव। कीपिंग द ऑब्जेक्टिव द सेम, now we have people coming in online learning. So how do an organization, as a team, realign? So all of these challenges are in place. So Sahil, you being a behavioral psychologist, आप हमें थोड़ा बताएं, how do we start answering those questions and start coping up? Well, the first thing you have to start with literally confessing to yourself that I do not know how to solve these new problems. Accepting that I have a fresh problem at my plate. See, the bigger problem that जो कि bottleneck बन जाता है, actually it's a big hurdle जो कि अभी हम face भी कर रहे हैं कोरोना में, and God forbid ये और लंबा हो गया तो it's going to devastate a lot of businesses because of individual mindsets. और वो क्या mindset है कि जिस momentum से हम कोरोना के अंदर enter हुए हैं ना, we are actually expecting कि हम उसी mental momentum से बाहर निकल आएंगे. It's a new problem. It was not a problem of our current situation, past situations. We were dealing with problems based on the environment that we were in for many years. All of a sudden, there's a totally different, globally evident, very forceful, life-taking, as critical as it gets, new problem. Now, this is a newer issue which there is no way that we were prepared for. So इसका मतलब है कि पुरानी कोई भी टेक्निक और कोई भी इंस्ट्रूमेंट इसके ऊपर वैसे नहीं चलेगा. I mean, if I'm actually working with my television set, all of a sudden somebody gives me a cell phone to fix, I'm not going to use the same tools to fix that cell phone. Even though it's engineering, I know I am an engineer, so I can fix this, but I got to change the tools. And before that, I need to admit that, it's a new problem I have. अब हो क्या रहा है, and I'm probably one of the very few trainers जिनके training की जो momentum है ना वो रुके नहीं. Somehow I'm training more in Corona than I was before. So all of a sudden I'm thinking जो management psychology है उसका जो सबसे बड़ा मसला ये है कि वो पहला step नहीं achieve करे. Agility तो बाद में आएगी. पहला step ये है कि भाई I need to unlearn every single thing that worked for me before Corona in managing people, in managing profitability, understanding why I'm not going to get profitability at that speed or at that level, understanding why I'm not going to get motivation in my employees, understanding why everybody is afraid, and everybody is afraid of losing their career more than losing their lives right now. ये बहुत बड़ा, और ये हर पेंडेमिक में पता नहीं मैंने पिछली देखी तो नहीं, मगर केस स्टडीज की डॉक्यूमेंटेशन भी इस तरह की है नहीं साइकोलॉजिस्ट के पास, क्योंकि पिछली इस लेवल की पेंडेमिक 100 साल पहले थी, उस वक्त इस तरह की record keeping होती नहीं थी. बट मैं ये नोट कर रहा हूँ कि when I've actually counseled people professionally, I'm talking about, and I've asked him कि आपको मौत का डर है, and they said नहीं, वो करियर चले जाने का डर है, नौकरी चली गई हमारी, पता नहीं बचेंगे कि नहीं. and I said आपकी जान लाइफ पे लाइन पे लगी हुई है, मगर आपको नौकरी का मसला इस वक्त पड़ा हुआ है. See, this is a totally different bipolar disorder that people have right now. And I purposely chose this specific disease of bipolar because it is shifting. जब वो खबर कोरोना के मरने की आती है, people forget about their jobs. और चूंकि वो खबर ज्यादा देर तक नहीं रहती, क्योंकि it's not it's a 97% success rate that people are going through. All of a sudden इनको दिलासे मिलते हैं और उसके बाद ये करियर के जाने के फियर में आ जाते हैं. तो दोनों तरफ पोल शिफ्ट हो जा रहा है कि जान चली जाएगी नहीं तो नौकरी चली जाएगी, जान चली जाएगी नहीं तो. And this is a legit fear. It's not like people make this fear up. So this is a new situation. And इसकी वजह से जो गिफ्ट मिले हैं हमें, those solitude working environments जिसके अंदर social distancing की वजह से लोग work from home model पे आ गए. Most of the companies could not possibly have trained their people on work from home. And मैं आपको रियल केस स्टडी बता रहा हूँ. टेलीकॉम ने 2018 में टेस्टिंग की थी. जोंग में मैं था उस वक्त. आई वाज टेकिंग केयर ऑफ स्ट्रेटजी. हमें बड़ा प्रपोजल आया था कि हम इनको फ्लेक्सी आवर्स के ऊपर लेके आते हैं, वर्क फ्रॉम होम मॉडल पे लेके आए. करीम इज माय क्लाइंट एट अ सेकेंडरी लेवल. करीम ने 2019 में ट्राई भी किया था कि हम वर्क फ्रॉम होम ही शुरू करते हैं. एंड इट वाज an experiment already going on without corona. Now
वो विदाउट द फियर ऑफ कोरोना एक्सपेरिमेंटेशन कर रहे थे, और उन्हीं कंपनी के साथ जब मैं अब बात करता हूँ and they're thinking हम कैसे मैनेज करेंगे remote teams, and I'm like, how are you managing it before, because you were the one who proposed this remote management. अब वो ना उस hysteria के अंदर they have actually lost the big perspective, the big picture perspective. और ये हर एक के साथ होगा. It's not anybody's fault. It's natural human psychology कि जब इस level की threat आपके सर पे तलवार लटके आके, so you're not going to be at your best IQ and your best EQ. And this is why सबसे पहले जो आपने क्वेश्चन पूछा ना, उसका जो जवाब है उसका सबसे पहले कि confess to yourself and start writing as a CEO, as a decision maker, as a manager, as a mother, as a father, कि ये मसले जो हैं ये बिल्कुल नए हैं, मुझे इनका कुछ नहीं पता. I am a first grade student of when it comes down to solving these problems, and that's when you're going to change the perspective of the solution. और जब आपको पता चलेगा कि ये problems जो हैं वो solve करनी है आपने, उसके बगैर चारा कोई नहीं है, तो मजबूरन आपको फिर भी इसी स्टेज पे ही आना है. मैं ये कह रहा हूँ कि let's just not go the hard way, just keep it professional, start plotting out all of those problems which are real and which are even trivial. अभी इस वक्त जो आपको trivial भी लग रहा है ना, वो भी आप लिखें कि ये मसले हैं मुझसे remote लोगों को ये नहीं चेक किया. मैंने अभी एक confession में बोली जा रहा हूँ, it's a psychological technique. उसको you don't have to confess anything, you just have to talk to yourself कि मुझसे ये ट्रस्ट नहीं डेवलप हो रहा. एंड दिस इज अ गर्ल हु मैनेजर who's writing, and it's a very big company. She's doing really well. She was the top performer for the last 5-7 years in her company. And when I said आपको सबसे बड़ा मसला क्या है, and she said मुझे ये यकीन नहीं आ रहा कि ये लोग दफ्तर 9 बजे लॉग इन करते भी हैं कि नहीं और 6 बजे छुट्टी कर भी रहे हैं कि नहीं. And I said, is that your biggest problem? Do you really think that's your problem? And she said, मुझे हर वक्त ये बात तंग करती है. मैं सुबह उठती हूँ और मैं ये देख लेती हूँ कि यार ये असल में पता नहीं लॉग इन करते हैं, मुझे बताते हैं कि नहीं. See, such a trivial thing was stopping her whole performance matrix के ऊपर एक छोटा सा पत्थर लगा हुआ है और उसका पूरा का पूरा जो है ना पैराडाइम शिफ्ट होगा. And I'm like, okay, आपके ये लोग रोज 9 बजे दफ्तर आ जाते होते थे? And she said, yeah. And I said, because of you? And she said, no. And then why would you think कि आपकी वजह से वो दफ्तर आते या नहीं आते? So you'll have to let go of those things which are not in your hands, and you'll have to show a lot of trust. मगर trust का जो chemical है ना, trust का जो nervous system है, एक खास nervous system से trust develop होता है ना, वो nervous system हमारा ना off है इस वक्त. इतना hysteria फैला हुआ है. हमारा इस वक्त sympathetic nervous system on है जिसमें सिर्फ fear और anxiety और all of that anxiousness निकल रही है. तो लोगों के ऊपर skepticism और जो distrust है वो भी बढ़ गया हुआ है. Now that's just an example I'm giving you. So when she wrote that down, she kind of found that out that it was not a big enough problem कि जिसकी वजह से बाकी ये काम हो. Problem है वो, it's a real problem. She's got lack of trust. But as soon as she found that out, now she's in a totally different perspective to solve that problem. She's a totally different monkey now. Now she can climb a totally different branch. अब उसके बाकी के जो प्रॉब्लम्स है ना वो एटलीस्ट वो सॉल्व करने के काबिल हो गई, वरना वो यही नहीं सॉल्व कर सक रही थी कि मुझे मसला क्या है. आई डोंट इवन नो व्हाट आई डोंट इवन नो. एंड दिस इज वेयर ये जो पैनिक सिचुएशंस होती हैं, स्पेशली इन दिस सिचुएशन जहां पे लोगों को वाकई में पीपल आर सफरिंग फ्रॉम द फियर ऑफ देयर लाइव्स. तो यू कैन जस्ट एक्सपेक्ट के ऐसे किया और व्हाट ये लो एक आर्टिकल भेज रहा हूँ वो पढ़ लोगी तो ठीक हो जाओगी, ऐसे नहीं होगा. इट इज गोइंग टू टेक अ कॉन्शियस एफर्ट कि मैं एक नई सिचुएशन में हूँ और पूरी दुनिया मेरे साथ है. अब मसला ये है कि मैं जब तक उसको एक्सेप्ट नहीं करूंगा तब तक आगे बढ़ नहीं सकूंगा. सो उसको बड़ा कैजुअली मैं कह सकता था कि फर्स्ट लेट्स अनलर्न व्हाट वी ऑलरेडी वर डूइंग. अब ये कहना बड़ा आसान होता है, बट ये ऐसे ही अनलर्न करना पड़ेगा आपको कि नाउ we are in a totally different planet. And I keep telling this to all of my clients. मुझे वो कह के क्लीशेइक लग रहा है, but we are not on planet Earth. 2019 तक we had conquered the planet Earth. Now all of a sudden we are in a totally different planet. Here there's a certain disease, एक खास वबा फैली हुई है, एक वायरस है जो हमें हर वक्त कत्ल करने की कोशिश कर रहा है. हमने हर एक को बचाना है, अपने आप को भी बचाना है, उसके साथ साथ यहाँ पे सर्वाइव भी करना है. That is not Earth-like atmosphere. So when you're in a different planet, you have to wear a different suit. You have to have a totally different tool.
एंड दिस इज द काइंड ऑफ एजाइल साइकोलॉजी दैट वी हैव. अगर मैं आपको मार्स पे भेज दूं, आप परफेक्टली एजाइल हो जाएंगे. यहाँ पे भी आपको वही एजिलिटी लेके आने, बिकॉज ये पहली दफा हुआ है मेरी और आपकी लाइफ में. जब पिछली दफा हुआ था, हमारे दादा हुजूर जिंदा थे, हमें तो नहीं पता कि पेंडेमिक सिचुएशन से कैसे पिछले सार्स के वायरस से डील किया था. सो जब आप इसको एक नया प्लेनेट डिफाइन करेंगे, तब तक कहीं जाके आपको अपनी नई ट्रेनिंग्स, नई एजुकेशन, नई मैनेजमेंट मॉडलिंग, तब कहीं जाके उसमें एंटर होंगे. एंड पीपल आर ग्रेट, आई एम टेलिंग यू, ऑल ऑफ अस आर टुगेदर. ये जो सेल्फ ट्रस्ट है ना, ये तो बहुत बहुत एक बड़ा लेवल है. सबसे आसानी से ना लोगों का ट्रस्ट गेन कर सकते हैं आप इस वक्त, क्योंकि हर एक को इस वक्त फियर है. वी आर ऑल इन दिस टुगेदर, वी हैव कॉमन ग्राउंड्स. लाइफ में पिछले 100 साल में एटलीस्ट पूरी दुनिया एक ही जगह पे यूनिफाई नहीं हुई थी. इस वक्त कोई काला गोरा, कोई सीईओ जेनेटर, कोई ब्राजीलियन, चाइनीज, सब के सब एक कॉमन ग्राउंड के अंदर हैं. वी आर रूटिंग फॉर द सेम फुटबॉल टीम, वी हैव द सेम टी शर्ट ऑन, वी आर इन द सेम पवेलियन. सो लोगों के ऊपर, अपनी टीम के ऊपर ट्रस्ट डेवलप करना सबसे आसान हुआ है. इतना आसान हुआ है कि लाइक दिस अपने ऊपर, लेकिन ट्रस्ट जो है ना वो इसलिए मुश्किल हुआ बिकॉज हम समझ रहे हैं कि हम पुराने मोमेंटम से ही नए प्रॉब्लम को डील कर लेंगे. सो दैट्स द फर्स्ट थिंग, लर्निंग हाउ टू अनलर्न योर एक्सेलेंस, जो कि आपने अचीव कर ली थी ना. दैट एक्सेलेंस इज यूजलेस नाउ, at least till all of this situation is there, and even a little after that as well. उसके बाद आपका एक ऐसी ओपनिंग होगी माइंड में, एंड आई एम टॉकिंग टू द साइकोलॉजिस्ट नाउ फॉर द फर्स्ट टाइम, आपका एक लर्नर्स एटीट्यूड दोबारा से आ जाएगा, जो कि आयरॉनिकली एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है कि कोरोना से पहले लर्नर एटीट्यूड वाज लाइक एन डाइंग ब्रीड, एक्सटिंक्ट हो गया हुआ था. लोगों के अंदर लर्नर्स एटीट्यूड ही खत्म हो गया, बिकॉज हाई मोमेंटम मशीन में ऐसे ही होता है, इतना कोई बड़ा मसला नहीं है. मगर अब हर एक का लर्नर एटीट्यूड बाहर आना चाहिए, और आ भी रहा है, मजबूरन आ रहा है, शौकिया नहीं तो. तो जब एक लर्नर एटीट्यूड बाहर आता है तो सबसे ज्यादा एजिलिटी होती है. द मोस्ट एजाइल पीपल are the people who are actually trying to learn from every and any obstacle, and that's why they adapt faster and they do not make the same mistake again. And that's the core of agility, कि आप प्रॉब्लम की कॉम्प्लेक्सिटी को तो समझ लें, मगर एक मिस्टेक को उस प्रॉब्लम में सोल्यूशन के दौरान दोबारा रिकरेंस नहीं होनी चाहिए, so that you would know कि इस मेज को कहां से एक्सप्लोर कर लिया आप, even if it's the last solution that you're going to reach, but it is not going to come in a wasting of time of repeating the same mistakes again. So this is something जो कि ये दो go to strategies हैं. Understand that you're in a new situation. All of your KPIs that you were meeting every day actually do not matter anymore. You got to rewrite your KPIs. You got to rewrite your processes. And then you got to understand कि मैं इसके लिए उतना ही नया हूं जैसे कि एक नए एम्प्लॉय को आप रखते हैं, और हर बंदा इस वक्त नया एम्प्लॉय है, दोबारा से ट्रेनिंग लें. तो ओनली थिंग दैट इज एन एसेट कि इस सिचुएशन में अगर आप लोग इकट्ठे रहे तो ऐसा बॉन्ड क्रिएट होगा पोस्ट कोरोना कि आपको टीम बिल्डिंग की ट्रेनिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी. अल्लाह ताला की तरफ से टीम बिल्डिंग की बेस्ट ट्रेनिंग इस वक्त चल रही है. ये PSTD जो टीम बिल्डिंग की ट्रेनिंग हम कराते हैं क्लाइंट्स को, हम आपको बता रहे हैं कि इससे अच्छी टीम बिल्डिंग की ट्रेनिंग का डिजाइन मैं नहीं लिख सकता था. ऐसी सिचुएशन में सबको डाल दो कि जो बहुत ही, मतलब इस लेवल की तो हम डाल भी नहीं सकते थे ना, इसके लिए तो लाइसेंस नहीं है हमारे पास कि लोगों को वायरस लगा दें. ये तो अल्लाह की तरफ से ऐसी एक सिचुएशन आई है कि एवरीबॉडी इज गोइंग टू हैव टू स्टिक टुगेदर एंड वर्क टुगेदर एंड लिसन टू ईच अदर सो दैट दे कैन फाइंड आउट के सॉल्यूशन ज्यादा, मोर हेड्स आर बेटर देन वन. सो the problem will be solved sooner and easier if you're actually doing it together with your people. अब एक मसला सबने किया है कोरोना में, और ये अक्रॉस द बोर्ड ही हुआ है, किसी एक दो कंपनीज का मसला नहीं है. सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से प्रोफेशनल डिस्टेंसिंग भी हो गई. ये बड़ा आयरॉनिक हुआ है, ये मजबूरी थी. हालांकि प्रोफेशनल डिस्टेंसिंग का मतलब है कि लोगों ने अपने काम भी आइसोलेट कर लिए. जो दफ्तर में साथ बैठ के काम करके एक दूसरे से मसले डिस्कस करते थे ना, वो डिस्कशन भी बंद कर दिए. हालांकि दैट इज 10 times more of a problem now. A lot of problems do not come just because आप दफ्तर जाते हैं. हमें पता नहीं होता ना इस बात का. हमारे दफ्तर में होने की वजह से काफी सारे इश्यूज हैं जो कि रेजिडुअल होते हैं, वो इनविजिबली खुद ही हैंडल हो रहे हैं, बिकॉज एवरीबॉडी इज टुगेदर. जस्ट लाइक एग्जांपल मैं उसकी देता हूँ, IT इशू का डिपार्टमेंट सॉल्व करता रहता है, हमें पता ही नहीं होता.
पीछे से वो सर्वर एडजस्ट कर रहे होते हैं. We do not know that because we are in a work environment. Just like that, management issues भी इसी तरीके से सॉल्व होते हैं. जब आप कॉन्फ्रेंस रूम में सबको बुलाते हैं, हम इतने यूज्ड टू हो चुके हुए थे इस बात के कि हमें ये नहीं पता था कि लोगों के इकट्ठा होने की वजह से इतने सारे प्रॉब्लम्स खुद ही सॉल्व हो रहे थे बिकॉज डिस्कशन और ब्रेनस्टॉर्मिंग चल रही थी. अब ये 2 एसेट्स आपके खत्म हो गए. अब चूंकि ये एसेट है नहीं, तो आइसोलेशन में सब के सब बंदों को अपना IQ एट इट्स पीक यूज करना पड़ रहा है. और इस वजह से वो ग्रुप जो है ना विजडम, वो ग्रुप विजडम आपका इस वक्त 0 पे. ये आपको खत्म नहीं करना चाहिए था इंस्टेंटली. ये जिस तरीके से नेटफ्लिक्स का अकाउंट जो है ना वो रेवेन्यू बढ़ा है ना इस कोरोना में, इस तरीके से व्हाट्सएप का रेवेन्यू बढ़ना चाहिए था. इस वजह से इस तरीके से स्काइप और जूम पे कॉन्फ्रेंस रूम्स बनने चाहिए थे कि हमने इसे कॉन्फ्रेंस रूम में बैठना, बिकॉज this is something which is in more of a need than it was before corona. उसके सोशल बेनिफिट्स भी बहुत सारे हैं और मेडिकल बेनिफिट्स भी बहुत सारे हैं कि आप लोगों से बातचीत रोज करें, एक दूसरे की जो है ना शक्ल सूरत देखें लोगों को कि वो किस सिचुएशन में है. एंड दिस इज समथिंग व्हिच इज माय थर्ड पॉइंट फॉर एजिलिटी एट, क्योंकि 45 मिनट्स में अब एजाइल मॉडल तो मैं नहीं बता सकता आपको, मगर ये 3 गो टू स्ट्रेटजीज इतनी जरूरी है ना कि फर्स्ट अंडरस्टैंड and admit. Secondly, go into your learning attitude. And third, realize कि वो वाली तमाम चीजें जो कि नेचुरल गिफ्ट के तौर पे दफ्तर आपको जो बिल्डिंग देती थी ना आपको, वो बिल्डिंग के गिफ्ट आपके चले गए हैं. तो ग्रुप and the team and all of those things which are not there anymore. So you'll have to create that virtually. And last but not least, Corona is one of the most widespread problem. Corona is not the the biggest killer in terms of its kill capacity. ये याद रखिएगा. ये as a scientist आपको बता रहा हूँ, टाइफॉइड अभी भी ज्यादा फेटल बीमारी है कोरोना से. अगर टाइफॉइड हो जाए, आपके चांस ज्यादा है मर जाने के कोरोना के निस्बत. So be very positive when it comes down to all of this. कि इस इशू को see, that's what I'm saying. Understand what the problem is. अभी भी मैं हैरान हूं कि 8वीं क्लास के बच्चों को भी पता चल चुका है कि कोरोना क्या है, कहां पे फैलता है, कैसे फैलता है, उसके किस तरीके से पल्मोनरी एडीमा होता है, पानी कहां पे ब्रोंकियोल्स के अंदर भर जाता है. ये स्कूल किड्स को पता है, मगर प्रोफेशनल और मैनेजमेंट स्टाफ को नहीं पता होता. वो भी सोच रहे होते हैं कि सर कोरोना एयरबॉर्न हो गया. मैंने सुना है कोरोना अगर एयरबॉर्न हो गया तो मास्क की तो जरूरत ही नहीं है. एयरबॉर्न ये नहीं हुआ हुआ. इट कैन सर्वाइव इन द एयर, इट इज नॉट एयरबॉर्न. एयरबॉर्न का बहुत डेवास्टेटिंग मतलब होता है. सो ये मैं क्यों एग्जांपल दे रहा हूँ, पीपल डोंट रियली नो हाउ टू अंडरस्टैंड ए प्रॉब्लम, एंड दैट्स अ वेरी सिंपल वे टू अंडरस्टैंड अ प्रॉब्लम. यू नो हाउ? रीड and ask the actual doctors about medical issues and ask actual scientists, which means your CEOs, your management, about your professional issues. Go to the source and ask the problem, the issue, the nature of the issue or the problem, and you'll find out कि आधे से ज्यादा मसले तो हल हो गए. मैंने जब पहली दफा एजिलिटी की ट्रेनिंग ली थी ना, तो मुझे सबसे बड़ा जो मशवरा मेरे उस वक्त के ट्रेनर ने दिया था, और अभी तक मैं हर एक को वही देता हूँ, कि the moment you are going to stop asking the questions, that is the problem. The moment you're going to create the biggest problem for yourself. It is such a cliche statement कि मैंने कहा क्या बातें कर रहा है, ये तो बच्चों वाली बात है. But trust me, इतना ज्यादा ईगो आ रहा था हमारे अंदर साइकोलॉजी कि हम बेसिक सवाल नहीं करते कि अगर ये पूछ लूंगा तो आगे ये इंप्रेशन जाएगा कि तुम्हें यही नहीं पता और तुम मेरे प्रॉब्लम सॉल्व करने आए हो. हालांकि इससे ज्यादा effective question कोई नहीं होता कि please talk to me like I'm a 4-year-old and explain to me the problems. And this is something which is going to help you in getting so much wisdom from people. And then you'll actually understand how to go about the solution. So I hope I gave you that 3-point strategy as descriptive as possible. क्योंकि ज्यादा short भी नहीं कर सकते. It becomes too acute, or ज़्यादा prolong भी नहीं कर सकते. It becomes a little too spread out. Very helpful tools. Very helpful tools. I have a point or two to discuss, but before that, we have our viewers and they're asking questions. We have Shazib Ul Mulk, who is asking, how can we tailor our mind to be agile? Is it a tool or a self-talk that you need? So he's talking at an individual level. I believe you already have answered that question.
Well, there is that's why I said models. अभी see, it's a very abstract term, agility. तो हर तरफ से ना यूनिवर्सिटीज तक इन्वॉल्व हैं इसके अंदर. सोशल साइंसेज आर गोइंग एट इट कि किसी तरीके से साइकोलॉजी को या एक इंडिविजुअल सेल्फ को किस तरीके से रीडिस्कवर करवाया जाए और एक खास चेकलिस्ट हर एक के पास हो. Just like any Six Sigma model for improving the quality of a machine, there has to be a certain Sigma model for a individual कि मैं किस तरीके से अपने आप को रीइन्वेंट करता रहूं या फिर अनलर्निंग का और लर्निंग का मैकेनिज्म मेरा एक साइकिल में चलता रहे. अब काफी सारे मॉडल्स हैं उसमें, बट I don't want to give a model right now. What I want to give you is a technique कि जब भी आपको, मैं देखें मसला पता क्या है, कोई भी मॉडल और कोई भी मामला इसलिए नहीं चलता इंसानों के साथ, और बड़े बड़े तैराक भी इसीलिए डूब जाते हैं और डॉक्टर्स भी इसीलिए गलती कर लेते हैं इतनी प्रैक्टिस के बाद भी, बिकॉज जब प्रेशर सिचुएशन बढ़ती है ना तो आपका माइंड जो है ना वो बहुत ही एक सेंसिटिव चीज है, वो एकदम अपने आप को सर्वाइवल मोड में ले आता है. और सर्वाइवल मोड में आपकी अपनी एफिशिएंसी जो है ना वो मिनिमलिस्टिक होती है, कभी कभी जीरो भी होती है. वी फंक्शन एज रिटार्ड्स एंड एट टाइम्स व्हेन वी आर पैनिकिंग. सो अभी फॉर एग्जांपल हसनैन और शाहजेब, अभी हम जब सेशन से पहले क्या हुआ था, हमारा एक इशू हो गया. मेरे जो लैपटॉप है ना उसमें इशू हो गया कि उसमें माइक्रोफोन ऑन नहीं हो रहा था. अब इतनी सी बात थी कि वो मेरे सामने वो शायद कहीं लगा हुआ था, बट पिछले 10 मिनट से मैं ट्राई कर रहा था कि ये क्या हो गया, और बार बार रीसेट कर रहा हूँ, और कभी लैपटॉप देख रहा हूँ, कभी ये देख, बिकॉज मेरा IQ ड्रॉप हो चुका है. Instead of understanding कि भैया this is not the end of the world, the worst case scenario जो है वो मेरे सामने होना चाहिए हर वक्त, और वो कोर्टिजोल प्रोन लोग भी रख लेते हुए वर्स्ट केस सिनेरियो के ऊपर तो कोर्टिजोल ट्रिगर होता है, लेकिन हमें उसकी प्रैक्टिस नहीं होती. हमें ना, हम करते क्या हैं जो कि कॉन्शियसली इस चीज इस फिनोमेना को प्रैक्टिस नहीं कर रहे होते. कॉन्शियस थिंकिंग में लेके आना पड़ेगा आपको कि सबसे पहले कॉन्शियस कॉम्पिटेंट हो जाए कि मैं एजाइल होना है, और वो प्रैक्टिस कर करके सब कॉन्शियसली कॉम्पिटेंट हो जाएंगे. उसका पहला जो टेक्निक है ना शाहजेब, वो यही कि वर्स्ट दैट कैन हैपन की प्लॉटिंग करें आउटर रिंग किसी भी सिचुएशन के अंदर. सी व्हाट आर द टू थिंग्स देयर आर, और थ्री थिंग्स, और इवन वन थिंग दैट इज गोइंग टू बी my loss, my loss of equity, or maybe money or life or this or reputation or whatever. Now in this case जब हमारा ये इशू चल रहा था, ऐसे ही लग रहा था जैसे बस जिंदगी मौत का हो गया. ब्रेन उसी लेवल पे रिएक्ट करवाता है. एक क्लास 1 में ना बच्चे की, मैं एक्सपेरिमेंटेशन की बात बता रहा हूँ, ग्रेड 1 में बच्चे की जब पेंसिल टूट जाती है ना और उसको डर होता है कि टीचर क्या कहेगी, वो उतना ही कोर्टिजोल है, उतना ही शिफ्ट होता है सिंपैथेटिक से सिंपैथेटिक, जितना कि एक स्काई डाइवर को आसमान से छलांग मारते हुए होता है. लिटरली उतना ही कोर्टिजोल ट्रिगर होता है दिमाग में. Now understand how your brain works and you will be 10 times more agile. अगर अपने आप को every new problem is as scary, every new problem is as scary as the biggest problem that you face. Yeah, no, there is no small problem. On the first instance, every problem is the same size, and that size is the biggest size you can possibly fathom. कि ये मेरे से नहीं होगा. So छोटे से बच्चे को पेंसिल टूटने पे और आपको स्काई डाइविंग करने पे जो फियर आएगा ना, वो एग्जैक्ट सेम अमाउंट ऑफ फियर है. अब मसला ये है कि अगर आपकी पेंसिल अभी टूट जाए, व्हाई आर यू नॉट गोना गेट अफ्रेड? आपकी एजिलिटी क्यों बरकरार रहती है आपकी पेंसिल टूट जाने से? दैट्स वेयर द एक्चुअल सॉल्यूशन इज. बच्चे को स्काई डाइविंग में भी उतना ही फियर होगा जितना बच्चे को पेंसिल टूटने में. आपको लेकिन आपकी पेंसिल के टूट जाने में उतना फियर नहीं होगा, बिकॉज देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन हाउ यू लुक एट the scope of the problem. So outer ring के अंदर वो scope करते हैं कि what's the worst that's going to happen after this. अब वो जो scoping है वो practice से ही आती है. वो किस चीज की practice? Consciousness की practice के हर problem से पहले एक template आपके ज़हन से generate हुआ करे कि okay hold on, I'm in this situation, what's the worst that can happen. अब हमारा शावर में पानी गर्म और ठंडे का ना मिक्सर सही नहीं काम कर रहा होता, all of a sudden उसी लेवल की पैनिक होती है जिस तरह के बाहर से कोई बम की आवाज आई. Because all of a sudden we forget the fact that it is an insignificant issue, it is a temporary issue, it is an issue which is not going to affect any of my things that actually matter. और हम तीनों के तीनों को चेक तब तक करेंगे जब तक कॉन्शियसली प्रैक्टिस में होंगे. और इसीलिए
एक मैनेजर जब सीईओ के पास जाता है तो सीईओ से कहता है कि यू नो I don't need you to tell me where the problem is. I need you to tell me where the solution is. And he can say that because after going through all those problems, वो CEO वो पेंसिल के टूटने की औकात को समझ चुका होता है. हमें लेकिन वो हर मसला बड़ा लग रहा होता है. So the more mature we are, the higher we go in the hierarchy. अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपका जो individual self है ना, that individual self is the CEO of your body. हम ये लोग समझ नहीं रहे. हमें ना अपने आप का सीईओ बनने में बहुत वक्त लग रहा है. और चाहे आप इंटर्नी क्यों नहीं है, जब तक आप अपने आप को नहीं समझते, आप एज अ सीईओ भी इंटर्नी रहेंगे. आपने देखे होंगे काफी सारे सीईओ ऐसे पैनिक कर जाते हैं. पार्लियामेंट हाउस के लीडर्स ऐसे पैनिक कर रहे होते हैं बिकॉज दे हैव नॉट बिकम अकस्टम्ड टू अंडरस्टैंडिंग के प्रॉब्लम की स्कोपिंग कैसे करनी है. अब मैं आपको बात बताता हूँ कि सोल्यूशन के लिए करते क्या है, मगर स्कोपिंग के अंदर ही सबके सब मोर देन 90% ऑफ द पीपल फॉल फॉर द evaluation ऑफ द स्कोप ऑफ द प्रॉब्लम. अब कोरोना को ही ले लें. कोरोना के लिए हमें 3 महीने लग गए खाली स्कोपिंग करते हुए कि प्रॉब्लम कहां से जाएगी, कहां पे हिट होगी. हर मशवरा जो है ना वो जो मोस्ट वैल्यूएबल मशवरा लग रहा होता है हमें, बिकॉज हमें खुद स्कोप का पता नहीं होता. तो जैसे बिल्कुल एक लेमन की तरह हर बंदा दवाई दे जा रहा है और मैं हर दवाई खाई जा रहा हूँ और उन दवाइयों के रिएक्शन से एक नई प्रॉब्लम और नया ही सिचुएशन क्रिएट कर दी मैंने. बिल्कुल इसी तरीके से हमने कोरोना के साथ किया. एंड टॉकिंग अबाउट द पीपल ऑन द टॉप ऑफ द गवर्नमेंट हियर. नाउ दिस इज समथिंग व्हिच नॉट जस्ट आवर गवर्नमेंट, मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट्स वेंट थ्रू, बट सम गवर्नमेंट्स डिडंट बिकॉज दे न्यू के let's just understand the problem first. We are not going to write a policy. I can, मैं अभी भी वो स्वीडन की ना वो जो चांसलर है उसकी जो लाइन है मैं वो हर एक को भी सुनाता रहता हूँ. The first thing Sweden said was कि how can we possibly tell you whether we're going to lock down or not lock down unless you tell me what the actual problem is. आपने उस चीज का सोल्यूशन बताया है जिस प्रॉब्लम का आपको पता ही नहीं है. नाउ स्वीडन डिड नॉट लॉकडाउन, अभी भी उन्होंने लॉकडाउन नहीं किया और क्या पता गलत डिसीजन हो, बट एटलीस्ट उन्होंने इस मैकेनिज्म को नहीं तोड़ा कि पहले प्रॉब्लम तो समझ लें बाद में सोल्यूशन की तरफ जाएंगे. जस्ट बिकॉज यू आर सेइंग हमें तो पता ही नहीं है वायरस कैसा है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि इसका कोई सोल्यूशन निकला है. सो अंडरस्टैंड एंड लर्न इट लाइक अ लिटिल चाइल्ड. एंड जब तक आपका वो लर्नर एटीट्यूड ऑन नहीं होता तब तक आप सोल्यूशन की तरफ तो जा ही नहीं सकते. तो लर्नर एटीट्यूड जो है ना वो आपको ऑन करना ही करना है. मैं आपको जान के फ्लो चार्ट्स नहीं बताए, वरना स्क्रीन शेयरिंग में हम आपको फ्लो चार्ट्स डाल देते हैं एजाइल माइंडसेट के क्या है, क्या क्या टेम्पलेट इस वक्त चल रही है. ट्रेनिंग मॉडल में हम कौन सा एजाइल मॉडल निकालते हैं, मगर 45 मिनट में इस वक्त मैं आपकी अटेंशन अपने आप से डिविएट नहीं करना चाहता. अंडरस्टैंड योरसेल्फ कि मैं किस जगह पे पैनिक कर जाता हूँ, और उसके इंडिकेटर्स आपकी बीवी और आपका शोहर बताएगा आपको. सबसे बड़ा वो हो रहा है एक्सरे मशीन आपका स्पाउस होता है. वो आपको बताता है कि यार हर बात के ऊपर तुम्हारे टेंट्रम्स हैं, ऑन द स्पर तुम एकदम पैनिक कर जाते हो. फिर आपके दोस्त यार बताते. स्टार्ट टेकिंग दैट फीडबैक कि मेरी नेचुरल रिस्पॉन्स मेरा क्या है. एम आई a guy who does not scope anything or am I a guy who scopes everything? There is no third person. या आप स्कोपर हैं या आप बिल्कुल ही वेवर्ड आदमी, हर चीज को एक्सट्रीम पे समझ लेते हैं. So it is great, something great. which is going to help you understand कि मैं अब क्लाइंट का नाम नहीं लेता. मेरे क्लाइंट हैं हॉस्पिटैलिटी के सीईओ हैं, वन ऑफ द बिगेस्ट चेन्स इन द वर्ल्ड पाकिस्तान में. तो वो उनकी ट्रेनिंग करते वक्त we had to actually put 60 hours of counseling his wife. कि असल में आपके डोमेस्टिक इश्यूज हैं जिसकी वजह से आपका सारा का सारा जो है ना रेजिडुअल जो ड्रेन है वो आपके एम्प्लॉइज के ऊपर आ रहा है. 16% टर्नओवर बढ़ चुका हुआ था बिकॉज ऑल ऑफ अ सडन ऑन द स्पॉट डिसीजन ले रहे हैं और मोस्ट ऑफ डिसीजन गलत हो रहे हैं. एंड मैं उनकी ट्रेनिंग से काउंसलिंग तक न बताई और उनकी काउंसलिंग से उनकी बेगम की काउंसलिंग करनी पड़ी. और ऑल ऑफ ये हॉस्पिटैलिटी का जो टर्नओवर है ना 2 या 3% होता है और ये भी बड़ा अलार्मिंग होता है. उनका 16% पे जा चुका हुआ. सो वी वर थिंकिंग क्या हो रहा है नीचे. एंड ही वाज लाइक मेरे जो लॉबीज बन चुके हैं, साइलोज हैं, आई नीड यू टू अंडरस्टैंड, टीम बिल्डिंग के प्रोग्राम्स करो और स्ट्रेटजी बनाओ कि इनको आपस में सिंक कैसे करें. 2 बूट कैंप्स कर चुका था टीम बिल्डिंग के प्रोग्राम की बजाय. ऐसे यू नो व्हाट एक्चुअल प्रॉब्लम इज विद यू, नॉट विद दीस पीपल.
I've taken a sample, 3 दफा sample ले चुका हूँ मैं, program के लाखों रुपए कमा सकता हूँ. You're giving me the money, but it's not going to solve anything. You have an actual problem, and sit down and let's talk about this. It took him only 2 hours of a session to start confessing. See, confessing. ये मसला भी है मेरे साथ, ये मसला भी है. And I said, अगर आपके बॉस के साथ ये मसले हो ना जो आपने लिखती हैं, तो आप रिजाइन करके भाग जाएंगे. So why are you expecting other people to stay? And he was like, yeah, well, people are not the same. कुछ लोगों में ज्यादा resilience होती है. I mean, he just laughed it out कि आप सही कह रहे हैं कि मैं लोगों से resilience expect करके उनको बचने की कोशिश करवा रहा हूँ कि मैं तुम्हें टॉर्चर करता रहूंगा, तुम अपनी रेजिलियंस की बिना पे रुके रहो. रेजिलियंस की बिना पे रुकते नहीं है लोग, अपने आप को मुश्किल से सर्वाइवल में मेंटेन करते हैं. सो ये एक और मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, बहुत जरूरी एग्जांपल है. जो मेरा एक और क्लाइंट है, उनके दिस गाय इज कॉलिंग एट 8:30 एवरीबॉडी कि आप लॉग इन किए हैं कि नहीं. एवरीबॉडी गेट्स अ कॉल WhatsApp ग्रुप के ऊपर 8:30 प्लीज लॉग इन एट 9 o'clock. एंड आई एम जस्ट आस्किंग हिम अ सिंपल क्वेश्चन कि आप जब दफ्तर जाते थे लाहौर में तो 8:30 बजे आप WhatsApp ग्रुप पे हर एक से पूछते थे कि घर से निकल गए हो कि नहीं. एंड ऐसे नहीं. एंड ऐसे तो व्हाई आर यू एक्चुअली पुटिंग एन एक्स्ट्रा प्रेशर. वो कोरोना के प्रेशर के अलावा एक आपका प्रेशर भी आ गया कि 8:30 बजे आप चेक. व्हाई आर यू चेकिंग अप ऑन पीपल? 9 बजे अगर वो दफ्तर नहीं आते देन यू हैव अ राइट टू चेक. व्हाई आर यू चेकिंग अप ऑन 8:30? अनदर एक फ्लैग और ऐड कर दिया आपने. See, problem is with you, not with them. As soon as you understand कि मेरे साथ issues हैं, मैं all of a sudden एक solution provider बन जाऊंगा. अभी 2 ही तरह के लोग होते हैं ना, एक problem provider होते हैं, एक solution provider होते हैं. ये याद रखिएगा, ये basics हैं कि या मैं problem create करता हूँ या solution create करता हूँ. मैं एक spectator भी हूं ना तो मैं problem create करने वाला हूँ. Because if you're not solving the problem, then you are the problem. Why are you not helping out in solving the problem? So ये बहुत जरूरी है. ये हुआ था डेल के साथ. डेल के साथ सबसे पहले ये मॉडल उन्होंने किया था. ये 15-20 साल उन्होंने अप्लाई किया वर्क फ्रॉम होम. मोर देन 60% ऑफ द बेस वाज वर्किंग फ्रॉम होम. ऑल ऑफ अ सडन द सीईओ चेंज्ड. और ये याहू के साथ भी हुआ. याहू की केस स्टडी तो बहुत ही बड़ी है. ऑल ऑफ अ सडन दिस सीईओ जो डेल ने चेंज किया, एंड शी सेड कि मुझे नहीं समझ आती कि आप लोग वर्क फ्रॉम होम के ऊपर लोगों को ट्रस्ट कैसे करते हैं कि वो काम कर रहे हैं कि नहीं. तो पिछले जो टीम थी, जो पिछले सीईओ की जो टीम थी जिसने रिसीव लिया था, उनके एचआर के चीफ ने कहा कि मुझे भी नहीं समझ आ रही थी जब तक कि 10 साल उन्होंने काम करके नहीं दिखा दिया हमें. 10 साल से ये कर रहे हैं. Why are you all of a sudden questioning the integrity of people? She rolled them out back. उन्होंने रोल बैक कर लिया. The program roll back. But during that very year, बल्कि 2015-16 की बात ही बता रहा हूँ, Yahoo went work from home. याहू वर्क फ्रॉम होम के बाद उनकी भी सीईओ बदली और उसने कहा कि आई डू नॉट ट्रस्ट पीपल. उनकी वजह से इतने सारे और मसाइल हो गए कि आई कैन इवन एक्सप्लेन टू यू कि लोगों के टर्नओवर जो बढ़े, कंप्लेंट बढ़ी, और उस सीईओ की जो एग्जिट था. You Google it up, you'll find out. I'm not going to go in detail because we're talking about a person. I tend not to talk about a person study, case study. एक जनरल बता रहा हूँ कि हर इश्यूज वर सो मतलब इनग्रेन्ड थे, वो डीपर लेवल के इश्यूज थे कि वो और ज्यादा बड़े एक पैरामाउंट लेवल का एक उन्होंने इशू किया. और याहू के साथ जो हुआ हम सबको पता है. प्लीज रीड दैट. ये वर्क फ्रॉम होम इज अ परफेक्ट एग्जांपल याहू और डेल की. और इनके साथ ये क्यों मसले हो रहे थे? बिकॉज दे समहाउ डिड नॉट नो कि असल में मसला इनका इंटरनल है, इंट्रिंसिक है, और सोल्यूशन ये एक्सट्रिंसिक ढूंढ रहे हैं. इसीलिए आपसे कह रहा हूं कि लोगों को इससे बड़ा कोई नहीं मौका मिला टू बिकम इन सिंगल वन टीम, और लोगों के साथ एक ही टीम के एनवायरनमेंट के अंदर रह के इतना आसानी से जो कमी है वो पूरी की जा सकती है. I'm not going to say that you're going to be 10 times more profitable because एक ही मसला लग गया सबको. मसला आप सबको है, इसमें कोई शक नहीं, और प्रॉफिटेबिलिटी भी शायद कम हो. I don't know. Every market has a totally different dynamics. Telecom की profitability बढ़नी चाहिए. Data traffic should be through the roof. I'm not in telecom anymore, so I do not know. For example, Netflix or Amazon है, इसकी traffic बढ़ चुकी है. AliExpress has registered new numbers all of a sudden. Alibaba has registered new numbers. Traffic तो बढ़ रही है, मगर खास segment. Let's take another question we have from one of our viewers. His name is Raza Adil. He says, KPIs are formed on stretch targets.
how farther can you stretch the KPIs now when we already are battling health and financial challenges globally? A very brief answer if you can give us so That's that we such can an move amazing towards. question. Amazing question. लेकिन KPI तो हमेशा स्ट्रेच ही रहेगा, मगर उस स्ट्रेच की जो इलास्टिसिटी है ना, अब वो रीडिफाइन करें. That's why I said no more KPI mentality from the past. KPI जरूर बनाएं, वो उन मेंटल प्लेटफॉर्म के ऊपर आप KPI नहीं बन सकते. अब नए KPIs बनेंगे बेस्ड ऑन द करंट सिचुएशन. करेंगे आप फिर भी स्ट्रेच ही. अगर स्ट्रेच ही नहीं किया तो एजिलिटी की तो खिलाफ बात कर दी ना हमने. We need to make sure that people outperform themselves. मगर totally different benchmarking है इस दफा. अब तकरीबन सारी कंपनी इनको मैं जानता हूं, उन्होंने अपने बेंचमार्क्स बदले. At least the one that I know of, we actually changed benchmarks of a lot of companies. And when we changed benchmarks, all of a sudden, it was new life that we breathed inside the companies. Even though stress वही थी कि मुझे अब ये काम पूरा कैसे करूंगा, मगर अब काम की नौयत ही हमने बदल दी थी because benchmarking बदली. Work from home के अंदर आप there's so much that you can do. There are a lot of things that you won't be able to do because you are at home in isolation. And there are so many things which you can only do now since you are at home, which you could not do in those buildings. So इस लिहाज से भी आपको ये सारा का सारा मामला in the big picture देखना पड़ेगा ना, इसकी स्कोपिंग देखें. तकरीबन सबके KPIs ऐड हुए हैं. That is a big disease. ऐड करने से कुछ नहीं होना KPI को. KPIs सारे के सारे डस्टबिन में जाएंगे और अभी का विजन और मिशन जो भी आपका बन रहा है इन अगले सालों का, उससे रिवर्स इंजीनियर करके इस सिचुएशन के KPI बनेंगे जिस पे एम्प्लॉइज परफॉर्म कर भी सकें. मगर ये होंगे स्ट्रेच ही. देयर इज नो वे कि आप इन लोगों को इस जगह पे सोचें कि हाँ चूंकि कोरोना आ गया है तो I'm going to relax my company. That's against the very health of the individual who's working. Make sure he's on top of the game. So that he can outperform himself. He needs that sort of purpose. कि मैं दफ्तर आता हूँ तो मैंने अपने आप को टेस्ट करना है यहाँ पे. Is this not a leisure environment that you're going to give him in terms of specifically businesses? वैसे ही businesses नीचे जा रहे हैं. बिजनेस के ओनरशिप की तरफ से सोचे ना. Own your companies. Employee mindset से नहीं सोचना आपने. Owners mindset से सोचना है कंपनी को कि मेरी कंपनी है, ये आगे इस बेचारी कंपनी का हाल बुरा होने वाला है because of the situation. अब तो हमें KPIs और स्ट्रेच करने चाहिए थे ताकि हम प्रॉफिटेबिलिटी में आए. Why are we thinking of just ourselves and not as an part of the company? अपना स्टेक क्यों नहीं ले रहे उस कंपनी में? So these are real things that companies have to do. Specifically, इसको redefine the KPIs कहते हैं, मगर redefine the KPIs में it does not cut it. People don't understand कि redefine the KPI का मतलब है वो पूरा प्लेटफॉर्म ही बदल दें KPIs का. Benchmarking totally different things. That's something that you also mentioned earlier, that we really need to rewrite the processes from scratch. Oh yeah, everything's changed. देखिए वो मजबूरन करना ही पड़ेगा. Yeah, there's a reason why we call it the new normal. And thank you so much, Sahil. Thank you so much. Let's call it the new planet. New planet, yeah. So you have to put on that new space suit now. Yeah. Actually, ज़्यादातर तो लोगों ने पहने हुए space suits. Great, sir. Thank you so much for joining us today. This was our very first program, and you've been our first guest today. Thank you so much for enlightening us on agility, the mindset, how people should collaborate and communicate working together. If we focused a lot on the word fear itself, कि fear कैसे होता है, experience की वजह से. I really like the analogy of from breaking the pencil to skydiving. How they're equal together. I really loved it, and I hope we'll have you inshallah again with us. Thank you so much for your time. We've taken the questions. I'll see if we have any more questions. No, we're done with all the questions. Great, sir. Thank you so much. Thank you, Hassan. It's always a pleasure. PSTD is my house, so let's just keep this momentum going on with other people and the other topics, and inshallah, I'm Great. always here. Thank you for having me. For all the viewers who are listening to us and will be listening to us going forward once this video is posted on our page, please reach out to us for any programs that if you want to have for your team, for your organization, for management, for as a communication campaign, because as I feel this is the time when we need to catalyze communication the most.
inside organizations. अगर हम एक दूसरे से सवाल नहीं पूछ रहे, अगर हम बात नहीं कर रहे, अगर हम share नहीं कर रहे, तो we're stuck in silos. Hence, वो agility आएगी नहीं. So this is where I close my session today. Thank you so much, Sahil. Thank you so much to our viewers. Please take care of yourself. Inshallah, we'll see you again with a different consultant, a different topic to open our minds again. Take care. Allah Hafiz. Allah Hafiz.